Hello everyone. So finally, Neet 2021 has happened, and I, Sachin Jain, I am here to discuss the chemistry section, the answer and the solutions. Talking about the difficulty level, as usual and as expected, chemistry section was the simplest, and most of the questions, like last year, Neet 2020, were straightforward and factual. If I talk about physical, organic, and inorganic, all the three sections were covered, and the questions from physical chemistry also were not so very calculative, they were very simple. Let's look at the questions. So, starting with section A, the first one. Right option for the number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive unit cell are. Now, hexagonal primitive unit cell, meaning we can consider it as the hexagonal closed pad. And as we know that the number of atoms per unit cell in a HCP is equal to 6. Now, the number of tetrahedral voids are always equal to twice the number of atoms per unit cell, that will be twice 6, and the number of OVs are equal to the number of atoms per unit cell, that is 6. So the TVs for this will be 12 and the OV will be 6. That is why the correct answer will be 12 and 6 respectively. Remember, the first part is tetrahedral and then octahedral. So tetrahedral is twice and octahedral is the number of atoms per unit cell. For HCP, it will be 12 and 6. Answer is option 4. The second, a very simple, very straightforward, and very commonly asked question. Zirconium and hafnium have similar atomic and ionic radii. Of course, it's because of lanthanide contraction. Option 3. Third, it's related to the enthalpy and the activation energy relation. For a reaction A to B, enthalpy of reaction is minus 4.2 kilojoule per mole. From the data, delta H is minus 4.2 kilojoule per mole. इससे इतना तो समझ में आता है that this reaction is an exothermic reaction and enthalpy of activation is 9.6 kilojoule per mole. So correct potential energy graph for the reaction will be what? Now, exothermic reaction matlab your final energy of the product should be lesser as compared to the reactants. मतलब ये reaction अगर देखोगे तो this will be an endothermic reaction. This will be an exothermic reaction. Here the energy of the reactant and product are equal, so not applicable. And this is also an example of endothermic reaction. तो डेल्टा एच से ही पता चल गया था कि रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. So obviously the correct answer is option 2. Next, wow. Tritium, a radioactive isotope of hydrogen, emits which of the following particle? It's a well-known fact that tritium, the radioactive isotope of hydrogen, is a beta emitter. So obviously the answer is 1. 55. Simple question. The RBC deficiency is a red blood cell disorder. This deficiency is caused due to the deficiency of iron in our body, and that in turn is related to the deficiency of vitamin B12. 56. The molar conductance of NaCl, HCl, and sodium acetate are at infinite dilution. Now, the moment you read about infinite dilution, you should understand that this is related to the Kohlrausch law. So, the molar conductances are given respectively. So, conductance of the weak electrolyte, acetic acid, at infinite dilution is. So, the relation is well known. Lambda m naught of
acetic acid CH3COH will be calculated as per the molar conductances at infinite dilution of strong electrolytes. So it will be lambda m naught of CH3COONA plus lambda m naught of HCl and minus lambda m naught of NaCl. Simply the values are given. So sodium acetate का value है 91, HCl value is 426.16 and NaCl is 126.45. So almost यहाँ से difference देखोगे 390. So the answer is 390.71. No big calculation involved, simply application of Kohlrausch law. Wow, about IUPAC, the correct structure of 2,6-dimethyl DEC4-in. इससे ज़्यादा क्या मांगोगे आप? So from the name DEC4-in, the double bond is at the fourth position. यहाँ से देखेंगे, so अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So longest chain 10 कार्बन का है. Now numbering should be done such that the double bond should get the lowest possible number. If you number from here 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, सेकेंड पे आपका मिथाइल ग्रुप एंड सिक्स पे डी मिथाइल ग्रुप. So you can number it as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So longest chain and then numbering. These are the two simple IUPAC rules to be followed. अब यहाँ पर देखोगे तो longest chain यही आएगा, but the numbering will be double bond will be at the third position. Here also same thing, and here it is coming at the fifth position. So obviously the correct answer is option 1. The maximum temperature that can be achieved in blast furnace is, so maximum temperature जो है blast furnace में, that is achieved in the zone of combustion where the burning is an exothermic reaction and a high amount of energy is released, and the zone of combustion range is about 1700 to 1800 degree Celsius. The options में Kelvin में है, so around 2100 to 2200 Kelvin के आसपास का टेम्परेचर होता है. Answer is option 2. Identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkali. The first point is Hinsberg reagent is the reagent which is used to test for the type of the amine. And Hinsberg reagent का formula क्या होता है बच्चा? It's C6H5SO2Cl, benzene sulfonyl chloride. इस केस में for a primary amine you get a sulfonamide which dissolves in alkali because of the acidic H presence. Secondary में वो dissolve नहीं करता है, and tertiary में कोई visible change नहीं बताता. As per the statements, we have to identify the compound which is giving a solid, meaning the sulfonamide, which is dissolving in alkali. So obviously it has to be a primary amine. Primary amine matlab you have to just find out the functional group NH2 in the options. The first is a primary nitroamine, then we have a secondary amine, then we have a primary amine and tertiary amine. So हमें तो primary amine चाहिए था. Answer is the next. The following solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose into 50 ml of water with the osmotic pressure P1, 10 gram urea into 50 ml water with P2, and 10 gram of sucrose with formula C equals H22O11 into 50 ml of water with P2. So the right option for the correct decreasing order of osmotic pressure of the solution is. Now, osmotic pressure क्या होता है? Indicated as pi and is given by I into CR2. The
टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो इट्स कांस्टेंट। आर इज एनीवेज अ कांस्टेंट। और जो सब्सटेंसेस दिए हैं, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इसका आई भी तो फिक्स हो गया। सो इस कंडीशंस में ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड कॉन्सेंट्रेशन इन टर्न क्या होता है? इट्स द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। Concentration is number of moles per unit volume, which in turn is weight upon molar mass into 1 by the volume. यहाँ देखोगे, we have 10 gram for all the substances, 250 ml for all the substances, मतलब weight और volume भी तो fix है। मतलब इन substances का osmotic pressure सिर्फ molar mass के ऊपर compare कर सकते हैं। हमारे पास दिया है ग्लूकोज with osmotic pressure P1, then urea with osmotic pressure P2, and sucrose with the osmotic pressure P3. Molar masses पता होने चाहिए, 180, 60 and 342 ग्राम पर मोल में। तो लोअर द मोलर मास, मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा यूरिया का, फिर ग्लूकोज का, और फिर सुक्रोज का। सो द करेक्ट ऑर्डर शुड बी P2 greater than P1 greater than P3, and the option is option 1. You can check the code for your question paper. This is related to one of the codes, so basically you have to tally the answers. Next, the major product of the following reaction is, now first observation, it's an alkene added with HBr, so hydrohalogenation, और एरो पे peroxide दिया है। हमें पता है HB और peroxide की जोड़ी मतलब एंटी मार्कोनिकॉस रूल अप्लाई करना है। And as per NTMR, the negative part of the reagent goes to that carbon which is having more number of hydrogen. तो माइनस जाएगा ज्यादा के पास और प्लस जाएगा कम के पास। एंड NTMR जनरली प्राइमरी टाइप के हैलाइड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। So just a simple addition, no rearrangement involved, because this reaction involves the formation of free radicals which don't actually have the tendency to get rearranged because they are very reactive and transient species. Simply यहाँ पर आंसर है आपका प्राइमरी हाइलाइट में ऑप्शन 1. 62 two statements are given. Aspirin and paracetamol belong to the class of narcotic analgesics. No, एस्पिरिन और पैरासिटामोल नॉन नार्कोटिक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक, अरे ये उल्टा हो गया। मॉर्फिन हेरोइन नार्कोटिक होते हैं, एस्पिरिन पैरासिटामोल नॉन नार्कोटिक, यानी नॉन स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है? इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स choose the correct answer. So both the statement 1 and 2 are false. So option 2. Next question. The correct sequence of bond enthalpy of CX bond is. Now, halides के लिए, as we move down the group in the halogen family group 17, the bond length goes on increasing, hence the bond energy goes on decreasing. मीनिंग क्लोराइड से आयोडाइड बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होते जाता है, यानी क्लोराइड का सबसे ज्यादा, आयोडाइड का सबसे कम। सो द आंसर इज ऑप्शन 2. BF3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom respectively are. What more you could have asked for? BF3 is boron surrounded with 3 fluorine atoms. It's an electron deficient compound because of 6 electrons in the valence shell. And अगर आप वेस्पर थ्योरी अप्लाई करो तो बोरॉन यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स के साथ इन्वॉल्व है, that's why the hybridization is sp2, bond angle is 120 degree and the geometry is planar. आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम बोरॉन कितने हैं? It's sp2 and 6. Option 3 is the answer.
Which among the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole of an ideal gas? For 1 mole of an ideal gas, Cp minus Cv is obviously equal to R, the universal gas constant. Very well known relation. Answer. Among the following alkaline earth metal halides, one which is covalent and soluble in organic solvents. Now, down the group, if we talk about the halides of the alkaline earth metal or even alkali metals, the ionic character increases and the covalent character decreases. Ionic character increase होता है और covalent character which is also called polarizing power वो decrease होता है. So covalent character is basically related to the polarizing power, which in turn is related to the smaller size of the cation. So lithium from the alkali metal and beryllium from the alkaline earth metal family are generally forming the covalent compounds because of high polarizing power. And this is also related to the abnormal behavior for these two elements. So the answer is fourth one. An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. तो कंसिडर करो कि अपने पास 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन हो गया 78 ग्राम एंड हाइड्रोजन हो जाएगा रिमेनिंग 22 grams. The right option for the empirical formula of this compound is empirical formula क्या होता है? It's a simple mole ratio. तो आपके पास यहाँ पर weight दिया है, आप इसके मोल का रेशियो फाइंड कर लो. Moles is what? Given mass upon molar mass, which comes out to be 6.5. यहाँ पे given mass upon molar mass, that is 22. अब simplest ratio के लिए the lowest number, so the smallest number should be divided with all the elements का percentage. तो यहाँ पर आपको मिलेगा simplest वाला ratio, simplest ratio, and that is 6.5 divided by 6.5, which will be 1, and 22 divided by 6.5, which comes out to be 3.33. मतलब carbon and hydrogen is in the ratio 1:3.33. यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखोगे तो वी डोंट हैव एनी सच ऑप्शन. अगर राउंड ऑफ भी करते हैं तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर 3:10 मिलेगा. 3:10 का भी ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब they are expecting us to round off this 3.33 to the nearest whole number. Obviously ये 0.5 से कम है, मतलब हम. Next question 68. The major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent-2ene. This product formation is based on. Now, dehydrohalogenation is basically an elimination reaction and it follows the E2 mechanism. So here, the pent-2ene formation is based on the elimination rule, wherein the major and minor product is differentiated by the Seltzer rule. So the answer is Seltzer's, option 1. What is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? So we have acetone reacting with Grignard in dry ether followed by hydrolysis. तो अगर इसको जनरलाइज करके एनालाइज करोगे, as I say, then ketone plus Grignard gives you a tertiary alcohol, and जो tertiary alcohol मिलेगा that will have COH as a functional group and 3 alkyl group, copy and paste. एसीटोन के 2 मिथाइल ग्रुप्स और ग्रिग्नार्ड का एक इथाइल ग्रुप. YUPAC नेम करोगे तो दिस विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol. So the answer is option 4. Noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify an incorrect statement about them, about the noble gases. Noble gases are sparingly soluble in water. Yes, because noble gases अपने आप में they exist in the elemental form and they have the tendency to induce the
The water as a polar solvent have a tendency to induce the polarity into the non-polar noble gases. So because of that induced attractions, noble gases are soluble in water sparingly. So this is a correct statement. They have very high melting and boiling point. No, नोबल गैसेस के पास तो बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, तो उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है। तो ये इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर भी होना चाहिए। तो बाकी स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए। noble gases have weak dispersion forces, yes. Noble gases have large positive values of electron gain enthalpy, हाँ, because noble gases are completely filled, they have the H electrons in the valence shell, तो further electron gain करने की tendency नहीं रखते हैं। That is why we say they have large positive values of electron gain enthalpy, making the electron acceptance difficult. pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are given respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution is, this is from ionic equilibrium, and we are being given the pKa and pKb values of the weak acid and the weak base. डाइमिथाइलामाइन एक वीक बेस है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, सो फॉर अ वीक एसिड एंड वीक बेस उसका जो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है एंड इट्स सॉल्यूशन का pH कैन बी कैलकुलेटेड एज 7 plus half of the difference in pKa and pKb. So it will be 7 plus half of pKa is 3.27 minus 27. pKa is 4.77 and pKb is 3.27. This difference comes out to be 1.5. उसका आधा is 0.75. So answer is 7.75. Form a slightly basic solution. Third, the right option for the statement Tyndall effect is exhibited by, so इसका completion होना चाहिए, it's exhibited by a colloidal solution. Now NaCl, glucose, urea, ये तीनों clear solution बनाते हैं, यानी true solution बनाते हैं, but starch in water is a colloidal solution and Tyndall effect is shown by colloids. So the answer is third. Two statements given, acid strength increases in the order given as chloride to iodide increasing. As the size of the element increases down the group, the bond strength of HF to HI decreases and so the acid strength increases. Yes, because down the group क्या होगा, हाइड्रोजन तो फिक्स्ड है, हाइड्रोजन का साइज बढ़ते जाएगा, तो HX का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो H प्लस को निकालना आसान होगा, तो आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर, इट विल बी ऑप्शन 1, बोथ आर ट्रू। Next, ethylene diamine tetraacetate, EDTA ion is, it's a well-known thing that EDTA is a hexadentate ligand with 6 donor atoms and उसमें 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं, as you can observe from the diagram. बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया क्वेश्चन। Hexadentate ligand with 4 oxygen and 2 nitrogen donor atoms. Choose the correct option for the graphical representation of Boyle's law. We have been given the graph of pressure versus volume. हमें पता होना चाहिए कि Boyle's law में pressure and volume are inversely proportional at a constant temperature. Of course, PV का जो ग्राफ है वो एक rectangular hyperbola होता है। If you know that it's a rectangular hyperbola, तो आपका ऑप्शन 2 और 3 तो रूल्ड आउट है। अब अगर आइसोथर्म्स दिए हैं यानी अलग अलग टेम्परेचर पे, तो करेक्ट ग्राफ 1 and 4 में से कौन सा होना चाहिए? So let's consider this as T1, T2 and T3. तो एक सिंपल शॉर्टकट क्या दिया था कि एक वेरिएबल को आप कांस्टेंट कर लो। सो लेट्स मेक प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम आपका V1 हो गया,
ये वॉल्यूम आपका V2 हो गया और ये वाला ये वॉल्यूम आपका हो गया V3 और ये हो गया V1। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, दैट्स चार्ल्स लॉ। So if you see this T3 corresponding to V3, this should be the lowest temperature and this should be highest. यानी T1 बड़ा होना चाहिए T2 से and T3 से। तो ऊपर वाला टेम्परेचर हाई होना चाहिए, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। Simple graphical question related from the gas laws. The structure of beryllium chloride in solid state and vapor phase are respectively chain and dimer, linear, dimer and linear, या chain in both. Solid state में the beryllium chloride exists in the form of a chain, wherein chlorine forms a bridge between the beryllium atoms. तो ये ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगा आपको बेरिलियम क्लोराइड का। तो सॉलिड स्टेट में इट इज अ चेन स्ट्रक्चर एंड गैस या वेपर फेज में एग्जिस्ट एज अ डायमर। द टू beryllium atoms shares the two fluorine atoms and has each fluorine on either side. Answer is solid state में chain and then vapor या gas state में dimer. Which of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? Pure metal which is liquid at room temperature मतलब गैलियम या मर्क्यूरी। Now गैलियम या प्योर सेमीकंडक्टर्स को obtain करने के लिए there is a refining method which is called zone refining. It gives you almost 99.995% ultra pure metals and mainly silicon, गैलियम, जर्मेनियम के लिए ये वाला मेथड यूज करते हैं। Compound which shows metamerism. Metamerism is shown by oxygen containing ethers. तो अगर ऑप्शंस देखोगे या फिर it is also shown by ketones. So let's check the options. C5H12 corresponds to an alkane. C3H8O represents CnH2n plus 2O. C36O represents CnH2NO and C4H10O represents CnH2n plus 2O. So this particular compound, this particular formula would represent the alcohol and ethers. लेकिन 3 कार्बन में तो आपका एक ही ईथर पॉसिबल होगा। मेटामेरिज्म के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर तो पॉसिबल होना चाहिए, 3 कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसमें भी 3 कार्बन के लिए एक ही कीटोन पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास C4H10O, जिसमें अगर ईथर्स की बात करें तो यू कैन हैव मिथाइल सराउंडेड विद अ प्रोपाइल ग्रुप एंड प्रोपाइल में इट कैन बी एन प्रोपाइल या फिर आइसोप्रोपाइल एंड दूसरे में आपके पास 2 इथाइल ग्रुप्स हो सकते हैं। So if different alkyl groups are attached to the same functional group, then it shows metamerism. Correct answer 4. Correct option for the number of body-centered unit cells in all 14 types of Brevise lattice unit cells is. तो 7 टाइप के मेन ब्रेवाइस लैटाइसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज क्यूबिक, जिसमें सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड तीनों होते हैं। तो यहाँ बॉडी सेंटर्ड मिलता है आपको। देन उसके बाद हमारे पास टेट्रागोनल, इसको याद रखने के लिए टी भी दिया है, सो बी से बॉडी सेंटर्ड इसमें भी है। थर्ड में है ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें चारों टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, इसमें भी है। उसके बाद वी हैव मोनोक्लिनिक, वन एंगल इंक्लाइन। मोनोक्लिनिक को याद रखने के लिए मी दिया था, यानी इसमें सिंपल के अलावा एंड सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड नहीं रहता है। एंड बाकी 3 केसेस अगर देखें तो उसको आप याद रख सकते हो, RH T से ट्राई क्लिनिक होता है, H से हेक्सागोनल होता है, R से रोम्बोहेड्रल होता है। एंड ये RH T का खास बात क्या है, इट ओनली हैज द
primitive or the simple cubic cell. तो इसमें तो बॉडी सीक्रेट होता ही नहीं है, मतलब 7 ब्रेवाइस लैटाइसेस में यानी टोटल मिलाकर जो सब टाइप्स को काउंट करेंगे उसमें वी हैव ओनली 3 body centered cubic cells. Each of the following polymers is prepared by addition polymerization. Of course, option में देखोगे टेफ्लॉन है. Teflon is prepared from tetrafluoroethylene या ethylene and it is an addition polymer of CF2 double bond CF2. Answer first year. Nylon 66 is a condensation polymer. Novolec is an intermediate which is formed during the bakelite formation, and Dacron is the commercial name for Beryllium, which is also a condensation polymer. Next, a particular station of All India Radio, New Delhi, broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. Wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is simple frequency wavelength का question है. So nu is equal to c by lambda, that for wavelength आपसे पूछा गया है, it will be c by nu. C is 3 into 10 raised to 8 upon 1368 into 10 raised to 3 किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है. तो पावर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 10 raised to 5. इसको मैं ले लेता हूँ 3000 into 10 raised to 2 and divide by 1368. Now into 2 है, मतलब अगर आप देखोगे इस कैलकुलेशन को तो 200 के ऊपर वाला आंसर है, यानी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो रूल्ड आउट है. These two options were very close, मतलब here you just require an accurate calculation to be done, and when you do so you get the answer as option 1 219.29, which is rounded up to 219.3 meters. Answer is option 1. Which of the following reaction is a metal displacement reaction? Wow. First is a decomposition reaction. Second is a metal displacement reaction where aluminum has displaced chromium from its oxide, giving you alumina and chromium. This is Gold-Schmidt process. Next is hydrogen displacement reaction, and the fourth one is also a decomposition reaction. Correct answer is option 2. Incorrect statement among the following is actinoid contraction is greater for element to element than lanthanoid contraction. Absolutely correct statement है ये, आपको incorrect पूछा है. Now, actinoids में the shielding of the 5F is poorer as compared to the shielding for the 4F in case of lanthanide contraction. Because of poorer shielding, the contraction is also greater. Be correct. Most of the trivalent lanthanide ions are colorless in the solid state. हाँ, ये ऑप्शन क्लोजली देखेंगे तो partially correct है. Most of the trivalent lanthanide ions are colorless, but they're colorless in their ionic form in the solution state. Solid state में नहीं. ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है और ये आंसर होना चाहिए. अगेन बाकी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं? Lanthanoids are good conductors of heat and electricity. Yes, all the lanthanoids are metals except promethium, which is radioactive, and metals are good conductors, so ये भी correct है. Actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided. Actinoids जब finely divided होते हैं, they have a large surface area और उनकी reactivity lanthanoid से ज़्यादा भी होती है. Correct statement है. Answer is 2. Dihedral angle of least stable conformer of ethane is least stable eclipse conformation होता है. Eclipse conformation में dihedral angle 0 हो जाता है when the atoms are very close to each other, and due to electronic repulsions the stability is less. Simple application of Vesper theory over here. So you have to just identify the correct geometry. So PCl5 के लिए there is the central atom phosphorus which has 5 valence electron. तो यहाँ पर आपके पास होगा
pairs, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d which will correspond to trigonal bipyramid. So A का मैच फोर्थ ऑप्शन 1 and 4 में है, तो दो ऑप्शन रूल आउट कर दिए. SF6 is a well-known example of a perfect octahedral geometry because sulfur सेंट्रल एटम है विद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड पेयर बनाएगा, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा. sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, तो ये थर्ड. तो बी का थर्ड भी दिया हुआ है दोनों में. Br F5 सेंट्रल एटम ब्रोमीन है जिसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 बॉन्ड पारक बनाएगा, एक लोन पेयर होगा. दिस विल बी अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल व्हिच विल बी अ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री. मतलब Br F5 मैच होगा 1 से, उसी का 1 ये गया, आंसर है ऑप्शन 1. BF3 was trigonal plane. Now this is from section B. इसमें आपको एनी 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 15. So 86 में we have sodium acetate heated with NaOH and what, giving you ethane. This is a simple decarboxylation reaction wherein this sodium salt of fatty acids are treated with soda lime. Soda lime is a mixture of caustic soda and quicklime. Caustic soda दे के रखा है, quicklime पूछा था, आंसर है ऑप्शन थर्ड. The intermediate compound X in the following reaction: toluene plus bromyl chloride in CH2 giving you benzaldehyde. This is the famous named reaction called Attard reaction. Attard reaction में intermediate में bromine complex बनता है जहाँ पर the 2 hydrogen of the methyl group are eliminated and they are replaced with OCrOHCl2. OCrOHCl2. ये आपका Cr कॉम्प्लेक्स है या ब्रोमीन कॉम्प्लेक्स है जो इंटरमीडिएट they are expecting. So the answer is option 1, the intermediate of Attard reaction. Match list 1 with list 2. SO2 and O2 giving SO3. Of course, this is responsible for the acid rain because SO3 will combine with the moisture and will combine to give you sulfuric acid. Then so A का मैच 1 से, ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन 1. तो B का मैच 2 से स्मॉल, C का मैच थर्ड से और D का मैच फोर्थ से. I think this question has some problem with the options given. So let the correct answer key come from the NTA. I find this question to be helpful. Next, match the column from the organic chemistry named reactions को match करना है. Benzene with CuHCl and anhydrous AlCl3. This is famously the Caterman Koch formulation. A का मैच 2 से, A की ऑप्शन में आंसर फोर्थ होना चाहिए. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक मैच कर लिया उसके बाद आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है if you're sure about the named reaction. Then a methyl ketone with hypohalide giving you, this basically gives you the haloform. This is the haloform reaction. B का थर्ड से करेक्ट है. Alcohol and acid in presence of concentrated H2SO4 gives ester water, that's esterification, C का fourth. And then acid with X2 red P, this is the famously HVZ or the Helmholtz-Zielinski reaction. चारों मैच हो रहे हैं, correct answer is 4. Again, match the column. FeCN6 3 negative को मैच करना है magnetic moment से. So now FeCN6 3 negative में Fe का oxidation state 3 plus है. Fe अपने atomic state में 3d6 2 का configuration show करता है. Atomic number 26. 3 गायब हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, so 4s से 2 निकालो, एक 3d में से, so we have 3d5.
Cyano here is a strong field ligand. कैसा है? Strong field ligand. Strong field ligand है अगर हम crystal field splitting की बात करें into T2G and EG, तो इलेक्ट्रॉन 5 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पैर अप हो जाएंगे। तो यहाँ पैर होंगे तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए 1.73। शॉर्टकट भी था दैट द बोस मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू, एंड जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही नंबर का बोस मैग्नेट्रॉन होता है। सो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट। कभी सिमिलर आपको यहाँ पर मैच दूसरे में भी होगा, FeCN6 4 नेगेटिव, उस केस में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस हो जाएगा, और उस केस में द कॉन्फिगरेशन वुड बी 3D, हाँ 3D6। सिक्स के केस में अगेन साइन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये सारे पैर हो जाएंगे, तो ये मैच करेगा 0 से। सिर्फ एक मैच हो गया ए का 4 से, तो दो ऑप्शन तो रूल्ड आउट है, और सी का सेकंड से एक ही आंसर है आपके पास, ऑप्शन 4। The reagent are in the given sequence of chemical reaction is, so we have 2,4,6 tribromoaniline with nano 2 HCl giving you the diazonium salt, and then in presence of some reagent giving you only 135 tribromo So basically इस रिएक्शन में अमाइन ग्रुप को निकाला गया है। तो दिस नथिंग बट द फेमस रिडक्टिव डीएमिनेशन रिएक्शन, अमाइन को निकालने वाला रिएक्शन। अमाइन ग्रुप को निकालने वाले रिएक्शन में either we can use H3PO2 aqueous as the reagent, या फिर इथाइल अल्कोहल। चेक करते हैं ऑप्शन में क्या है। सिर्फ वाटर नहीं चलेगा, इथाइल अल्कोहल चलेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये अपना बेटरमेंट का रिएक्शन है। ऑप्शन 2। The product formed in the following chemical reaction is, so we have the functional group as ketone and ester. NaBH4 is a reducing agent, but it is a reducing agent affecting the aldehyde, ketone and many other functional groups, but not acid या ester. Acid या ester unaffected रहेगा, and ketone इस केस में reduce होकर secondary alcohol में बन जाएगा। यहाँ पर दोनों अफेक्ट हुआ है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर एस्टर ग्रुप एज इट इज है और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। 4 is the answer. From the following pair of ions, which ion is not an isoelectronic pair? Chloride and oxide obviously 10 electrons के साथ isoelectronic है। सोडियम मैग्नीशियम भी उसी सीरीज में isoelectronic है। Mn2 plus Fe3 plus। now मैग्नीज होता है अपना 3D5 और 4s2, Fe होता है 3D6 4s2। Mn के 2 प्लस में 3D का कॉन्फ़िगरेशन 3D5 आएगा, और Fe के केस में Fe 3 प्लस में भी 3D5 आएगा, तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो ये ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब आंसर इज 4। ऑब्वियसली फेरस और मैंगनीज 2 प्लस नहीं होगा, मैंगनीज। नेक्स्ट, the molar conductivity of 0.007 molar acetic acid is 20 Siemens centimeter square per mole. What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. So when the molar conductivity is given and we are required to find the dissociation constant, we require a formula alpha square C upon 1 minus alpha. Where alpha बहुत छोटा हो तो we approximate 1 minus alpha to 1, and we have the formula is alpha square C, wherein to alpha any degree of dissociation है that could be found as lambda by lambda naught. Is the ratio of molar conductivity at any concentration upon the molar conductivity at infinite dilution. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H प्लस और एसिटेट का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तो लैम्बडा नॉट will be equal to the sum of both of them, which will be equal to 400 centimeter square per mole. तो यहाँ से हाँ
और एक चीज जो लैम्डा है this could be calculated as 1000 k by c. That will be 1000 into the no, molar conductivity is already given. So lambda जो है एक particular concentration पे 20 दिया है Siemens centimeter square per mole. अब कुछ नहीं करना है भाई. It's 20 divided by 400 which is 1 over 20 which is 0.05. 5 into 10 is to minus 2. अल्फा छोटा है तो हम यहाँ पर k का वैल्यू अल्फा स्क्वायर सी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. So alpha square will be 5 into 10 power minus 2 whole square into concentration as 7 into 10 is to minus 3. It will be 25 into 7 into 10 is to minus 7. 25 7 175 होता है into 10 is to minus 7. It should be 1.75 into 10 is to minus 5. Concentration का यूनिट्स होगा मोल पर लीटर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन. Choose the correct option for the total pressure in atmosphere in a mixture of 4 gram oxygen and 2 gram hydrogen confined in a total volume of 1 liter at 0 degrees Celsius. R और T की वैल्यू दी है. So total pressure basically would be equal to pressure into the pressure equal to nRT upon V. तो टोटल प्रेशर टोटल मोल्स के बराबर ही डिपेंड होता है. टोटल मोल्स यहाँ पर ऑक्सीजन का होगा 4/32 एंड हाइड्रोजन का होगा 2/2 which will be 1 over 8 plus 1 equals to 9/8. Calculation 9/8 into R की वैल्यू 8.2 into 10 to minus 2, temperature 273 and volume is 1 liter. So the total pressure here, if you calculate, it will be 8 1 point 0 2 and 1. इसके 9 into 2.73 पास होना चाहिए. It will be somewhere around 25 points. So दो options है 25.1 and 26.02. Do the calculation. The correct answer is option 4. The correct option for the value of vapor pressure of a solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane in the molar ratio 3:2. 45 degrees Celsius पे vapor pressure of benzene and octane दिया हुआ है. Now, benzene to octane basically एक ideal solution form करता है. Ideal solution form करेगा तो Raoult's law apply होगा. So the total vapor pressure will be equal to sum of the vapor pressure of benzene and octane. Let's take it as PB and PO, which as per Raoult's law is given as PB naught into XB plus PO naught into XO. PB naught benzene का दिया है 280, मोलर रेशियो 3:2, बेंजीन टू ऑक्टेन दिया है तो ये 3/5 हो जाएगा एंड 420 PO naught है into इसका मोलर रेशियो 2/5 हो जाएगा. So this comes out to be 5 5 are 25, 6, 50, 50, 50, and 168. This comes out to be 5 8 are 40, and 5 4s are जो हो जाएगा 168. 168 का डबल. So 336 mmHg should be answered. Correct answer is option 1. For irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, the correct option is irreversible expansion under isothermal condition. Isothermal condition के लिए डेल्टा T 0 होता है तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा. तो डेल्टा U 0 वाला ऑप्शन आपके पास 1 and 3rd है. इसके साथ टोटल एंट्रोपी. टोटल एंट्रोपी is the entropy of the universe
which always goes on increasing as per second law of thermodynamics. So उसका zero तो कभी नहीं होगा, तो obviously correct combination option third होगा. Simple logic apply करना है. Which of the following molecule is non-polar in nature? PuCl3 C double bond O with 3 chlorine, ज्योमेट्री के हिसाब से पोलर होगा. Formaldehyde belongs to the carbonyl compound, वो भी पोलर है because of the difference in electronegativity. SbCl5 similar to PCl5 will be non-polar because ये perfect trigonal bipyramid geometry show करता है. That is why the non-polar compound is SbCl5. In which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it? Increasing acid strength, yes, ये तो पहले भी पूछा था. Acid strength iodide का सबसे ज्यादा होता है, यानी ये correct है. Then this particular sequence related with increasing pK value, no, ये incorrect हुआ ना, क्योंकि ये भी correct order of increasing acid strength है, तो ये increasing pK नहीं, increasing K है. यही आंसर है. इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, यस, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स का है. ऑक्सीडाइजिंग पावर पीपी को सबसे ज्यादा होता है, ये भी करेक्ट है. लास्ट, द स्लोप ऑफ आरएनएस प्लॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन -5000 K. द वैल्यू ऑफ EA फॉर द रिएक्शन इज. सिंपल आरएनएस इक्वेशन का एप्लीकेशन है. ln of K is -EA by R into 1/T plus ln of A. So from this, if I plot ln of K versus 1/T का graph, the slope is equal to the negative ratio of activation energy by R, which in turn is given as 5 into 1000. इसका यूनिट जो है वो केल्विन का होता है. That's why 5 into 1000 केल्विन दिया है वो. It's the unit which is given from the slope. Fine. So this in turn is equal to -EA by R. अब आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, नेगेटिव साइन कैंसिल ऑफ हो जाएगा. एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकता, एक ऑप्शन तो वैसे ही निकल जाएगा. एक्टिवेशन एनर्जी होगा 5 इंटू 8.314 इंटू 1000. और ये आएगा जूल पर मोल में. किलो जूल पर मोल में करोगे तो ये निकल जाएगा. तो 5 इंटू 8 40 के ऊपर वाला आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 1. So that's all. This completes the paper discussion of Neet UG 2021. This was one of the simplest paper till date. In fact, 2020 and 2021, both the years, the Neet paper was very, very simple. I hope everyone have also thought it to be a very simple paper, and your scores would definitely be higher in the chemistry section. All the best. Thank you. So round up करेंगे to 3. That's why correct answer should be option